Namaste. With the blessings and guidance of the Guru Mandala and the grace of the ultimate energy, the God, we are at part 5 of the project, The Inward Sea. Quoting Swami Vivekananda here, each soul is potentially divine and the goal is to manifest this divinity within and do this through any of the paths that are given to us. Bhakti Yoga, the path of love. Jnana Yoga, the path of knowledge to understand the significance of self-realization. Karma Yoga, the path of work. Raja Yoga, the path of meditation, mastering the mind. While these paths converge to one and the same goal of self-realization, the choice of the path or the paths that can be taken has been bestowed upon us as individuals who understand the primary goal of life. Doctrines, dogmas, rituals, books and temples and forms are but secondary details. Mohamudgaraha, meaning destroyer of illusion, is considered a summary of Adi Shankara's Advaita Vedanta. As a stalwart advocate of Jnana Yoga or Jnana Marga, he extols the Bhakti Marga in 12 verses of Mohamudgaraha, later came to be known as Bhaj Govindam, along with the hymns that were added up by his disciples. There is a clear underscore message that the renunciations of the egoistical differences and surrender to the ultimate makes the way for salvation. So, the devotion that is an important part of general spirituality gets explained briefly in this great work of Sri Adi Shankaracharya. We, the residents of Ashiana Shubham, present here Bhaj Govindam as part of the project The Inward Sea. Bhaj Govindam. Bhaja Govindam 1 to 4. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja
मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुन्करणे नहि नहि रक्षति डुक्रुन्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मूढजहिः धनागमतृष्णा मूढजहिः धनागमतृष्णा कुरु सद्भूतिं मनसि वितृष्णा कुरु सद्भूतिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातं यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदयचित्तं वित्तं तेन विनोदयचित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनभर नाभिदेशं नारीस्तनभर नाभिदेशं दृष्ट्वा मगा मोहावेशं दृष्ट्वा मगा मोहावेशं एतन्मांसवसादिविकारम् एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नलिनीदलगत जलमतितरलं नलिनीदलगत जलमतितरलं तत्त्वजीवितम् अतिशयचपलं तत्त्वजीवितम् अतिशयचपलं विधिव्याद्य विमानग्रस्तं विधिव्याद्य विमानग्रस्तं लोकं शोकं हतं च समस्तं लोकं शोकं हतं च समस्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। हे मोह में डूबे मित्रों, गोविंद का नाम लो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम तो याद रखते हैं लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ஓ மானிடா, பகவானை மனதால் நினைத்து பக்தி செய்வாயாக. வார்த்தைகளால் துதி செய்தும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்தும் ஸ்ரீ கோவிந்தனை நினைத்து பூஜை செய். புதியதாக இலக்கண சூத்திரங்களை மனப்பாடம் செய்வதிலும் பிறருடன் தர்க்கம் செய்வதிலும் காலத்தை வீணாக்காமல்
இருக்கும் சொற்ப காலத்திலாவது கோவிந்தன் நாமத்தை பூஜித்து இரு. ஏனென்றால் காலன், அதாவது மரணம், வரும் நாளும் நேரமும் யாருக்கும் தெரியாது. அச்சமயத்தில் வேறொன்றும் காப்பாற்றாது, பகவானுடைய திருநாமம் ஒன்றே காப்பாற்றும். Worship Govinda, seek Govinda, seek Govinda. O fool, O ignoramus, this endless repeating of grammar rules will not save you when death comes at the appointed time. గోవిందుని సేవించుము, గోవిందుని సేవించుము. ఓ మూఢ మానవుడా, గోవిందుని సేవించుము. మరణము సమీపించినప్పుడు దుఃఖంకరణి అను వ్యాకరణ సూత్రము నిన్ను రక్షించదు. हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो. परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहो. ஓ அறிவிலியே, இந்த பிறவியில் இப்பொழுது அனுபவிக்கும் செல்வம் முன் ஜென்மத்தில் நீ செய்த நல்வினை பயனாக வந்துள்ளது. அதனால் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் அடைவாயாக. மென்மேலும் செல்வம் வேண்டும் என்று பேராசைப்படாமல் பரமாத்மாவிடம் மனதை செலுத்தி மகிழ்ச்சியாயிரு. O mindless fool, give up your insatiable greed to possess or amass wealth and materialistic things. Turn your mind to the noble thoughts, serenity, devoid of passion. Accept with contentment your past karmic action and be satisfied with whatever you get as a result of your past action. Engage your mind with noble thoughts. ఓ మూర్ఖుడా, ధన సంపాదనపై ఆశ వదులుము. వైరాగ్య భావనను మనసులో నింపుకొలుము. సశ్వక్తిసే సంపాదించిన ధనముతో ఆనందించుము. स्त्री शरीर पर मोहित होकर मन को प्रभु की भक्ति से मत हटाओ, क्योंकि शरीर सिर्फ मांस है. मन को प्रभु की भक्ति में लगाओ और नारी मोह त्याग दो. ஏ மானிடா, பெண்ணின் சிறப்பு தோற்றமாக அமைந்த உறுப்புகளைக் கண்டு மயங்காதே. அவை தசை, கொழுப்பு, உவநீர், குருதி முதலியவற்றால் ஆன சரீரம் என்பதை மனதில் நினைவு கொண்டால் மோகம் ஏற்படாது. இந்த வைராக்கியம் ஏற்பட்டால் ஞானம் எளிதில் கைகூடும். Do not fall prey to the maddening lustful delusions and get enticed at the sight of physical features and its glamour. These body parts are nothing but fat and flesh that expires. Remind yourself this truth over and over again in your mind. యువతుల స్థనములను నాభిని చూసి మోహావేశం పొందకుము. అవన్నీ మాంసపు ముద్దలే అని మరల మరల మనసులో తలుచుము. ये मानव जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंदों की पानी की तरह निश्चित नहीं है. ये जान लो, इस संसार में सभी विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबे हुए हैं. தாமிரை இலை மீது தண்ணீர் அதில் ஒட்டாமல் உருண்டு உருண்டு நிலையில்லாது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அதுபோல நம் வாழ்க்கை நிலையற்றது. பிணியும் அகங்காரமும் நிறைந்த இவ்வுலக வாழ்க்கை அழியக்கூடியது. ஆகவே ஆண்டவனை நினைத்து பூஜிக்கும் ஞானத்தை உடனே பெறுவாயாக. Like the dancing droplet on the lotus leaf, life is very unsteady, ever changing, transitory, and uncertain. Understand that this world is prey to disease and conceit, and is constant sorrow and grief. Understand that. తామరాకుపై నీటి బొట్టి వలె జీవితము మిక్కిలి చంచలమైనది. లోకమంతా వ్యాధులతో దురభిమానముతో నిండి శోకించుచున్నదని తెలుసుకొనుము.